आई स्टार्टेड राइडिंग ट्रैवलिंग बैक इन द ईयर 2011 जब मेरी नई नई मोटरसाइकिल आई थी CBR 250R. द वेरी फर्स्ट राइड दैट डिड वॉज टू पुष्कर. 2.5-3 घंटे का रास्ता था. एक दिन में जाकर हम लोग आ गए थे. बस घाट तक जाकर we just touched the place and came back. From then, when I just touched the city and came back, to today, about 10 or so years later, when I spent 2-4 दिन पुष्कर के अंदर, I have come a long way in terms of exploring the city, knowing about the city and knowing about myself as well. इस बार जब मैं पुष्कर गया तो I thought that I will take you guys along with me. I will tell you what to do in Pushkar. There are famous places in Pushkar. There is Pink Floyd Cafe in Pushkar, जिसका सनसेट, जहाँ के रूफटॉप से सनसेट बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है. There is जो बाज़ार है बाहर का, उस पर शॉपिंग करना इनक्रेडिबल. पुष्कर की कपड़ा फाड़ जो होली है, अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट होलीज इन द कंट्री. देर आर रियली नाइस हॉस्टल्स, देर आर रियली नाइस कैफ़ेज जिनकी रूफटॉप पे बैठ के आप पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हैं. बट I have done that a lot of times, so I didn't do any of it this time around. इस बार I did very distinct things that were slightly different from the norm that people do in Pushkar. Also ये fair का time नहीं था, वो नवंबर में आता है, so camel fair also was not there when I went there this time. So here is I stayed at Dr. Alone Cafe and Hostel. Yes, Dr. Alone is the name of the place. It's managed and run by a doctor. Yeah, an actual doctor is running a hostel in Pushkar. The most beautiful, the most incredible part of this hostel is that ये घाट के जस्ट साइड में है. जो कुंड है, जो वाटर की बॉडी है पुष्कर की, उसके जस्ट बगल में. And there is nothing else like that. No other hostel is situated in a location like Dr. Alone Hostel and Cafe. घाट के बगल में आप घाट से चढ़ते हैं ऊपर, and right there is Dr. Alone हॉस्टल एंड कैफ़े. आप रूम से बाहर निकलते हैं एंड बाहर बैठते ही देयर इज़ द घाट. I woke up really early in the morning and I decided to take a walk through the Ghat, enjoy the place, enjoy the views. और मैं ऐसे ही वॉक करते करते घाट के एक साइड से दूसरे साइड तक गया, विच इज़ द बिगनिंग ऑफ द पुष्कर मार्केट. पुष्कर मार्केट इज़ दिस अ वेरी स्मॉल लेन जहाँ से बेयरली पीपल कैन स्टैंड और व्हीकल्स कैन पास. कार्स जाती भी नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिल्स अलाउड है यहाँ पे. सो इस लेन के दोनों साइड्स पे देर आर वेरियस कैफ़ेज एंड बिजनेस establishments and shopping related things, but mostly trees that Pushkar sells to people. So मैं इस बाज़ार में गया, यहाँ पे मैंने घूमा बाज़ार के एक एंड से दूसरे एंड तक. फिर उसके बाद में फाइनली आई डिसाइडेड टू ईट फूड. पुष्कर इज़ फेमस फॉर इट्स मालपुआ. मालपुआ इज़ दिस डिश विच इज़ सोक्ड इन चाशनी, तो इट्स वेरी स्वीट एंड इनक्रेडिबल. लेकिन सिंस आई एम वेरी हेल्दी एंड आई मेंटेन अ हेल्दी लिविंग लाइफ, I decided to not get the malpua. I have already had hundreds of malpuas in my lifetime till date. So मैंने पूरी और सब्जी खाई नॉर्मल लोगों की जैसे. Do you guys know what a falafel is? Falafel is this Israeli dish which should be made our national food. Falafel ऐसे रोटी का बनता है, उसको रोल टाइप्स आप कर सकते हैं if you want. उसके ऊपर मेयोनीज, केचप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केचप्स, फिर सब्ज़ी, प्याज, टमाटर एंड मशरूम इवन समटाइम्स.
so on and so forth. And then there are balls of chicken or balls, patty sort of a thing if you are taking a veg falafel. And then there is hummus sauce. Hummus is Israeli national dish, and you put that on top of it, roll it up, and eat that gooey mass, and it changes your life. It's like food for gods. It's something that is fit only for gods. As human beings, हम लोग तो we are getting it, and we should be thankful for getting it, and we get it in Pushkar. If you want to eat real falafel ever, you should go to Pushkar. That's what I did. मैं वापस गया दिन में, उठने के बाद, काम वाम करने के बाद, I went back to my favorite falafel place. Favorite as in, I mean, there are only 2-3 falafel places. They are all side by side. One of them is my favorite. This place offers about 100 or so types of falafels, and I picked the mushroom chicken falafel out of those and enjoyed it. इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा खाना होता जा रहा है. Hence, I will now take this video to books. फलाफल खाने के बाद में मैं एक बुक स्टोर पे गया, और वहाँ पे मेरे को 5-6 बुक्स मिली, and I ended up getting those books for a really reasonable price. If you're a follower of the channel or you have seen any of my videos, you would know that I'm a very big sucker for really nice, beautiful sunsets. I keep doing sunset chasing wherever I go. Pushkar के भी मैंने sunset chasing का एक वीडियो बना रखा है, but that was sunset chasing from the hill. I also did sunset chasing from the कुंड. So जो घाट सेक्शन है, मैं डॉक्टर अलोन पे रुका हुआ था. वहाँ से अगर स्ट्रेट जाते तो मार्केट बाजार सेक्शन है, अगर राइट जाता तो सनसेट पॉइंट है, विच इज़ द डेडिकेटेड सनसेट पॉइंट फॉर द Pushkar city. And this evening I decided to go to that sunset point. Post sunset, it was time to go back to Dr. Alone Cafe and Hostel. While walking, I just got mesmerized by the aarti, chanting, and the puja that was happening. It just gives a very, very strong vibe on that place that you take along with. Enjoying in the evening when the aartis are going on and you're seeing the sunset, you're seeing the water body, you're seeing people around you. It gives good feels. So that was a day in my life in Pushkar in one video, and these were the 3 important things that I did. मैं सुबह पुष्कर गया, घाट सेक्शन को एंजॉय किया, फिर मैं दिन में गया, जाकर मैंने फलाफल खाया जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, बुक्स खरीदी, और फाइनली मैं सनसेट चेजिंग करने गया. सनसेट चेजिंग का एक और वीडियो है पुष्कर का. इफ़ यू वांट टू सी द अदर प्लेस जहाँ पे रोपवे जाता है, बट आई वेंट अप दैट हिल ऑन माई own 2 feet, then you can watch the video that came before this video. Next was time to go back to Jaipur, and I took my motorcycle out of Dr. Alone and
went back home. गाइस, जैसे मेरे को उदयपुर में हुआ था कि ये जगह छोड़ के ही नहीं जानी है कभी भी अब तो वैसे ही मेरे को यहाँ हो रहा है। पुष्कर तो हमेशा से मेरी मोहब्बत, मेरी जान, मेरा प्यार, मेरा मोस्ट फेवरेट सिटी इन द यूनिवर्स रहा है। और इस बार तो मैं एकदम यहाँ पे रहा हूँ 3-4 दिन प्रॉपर डॉक्टर अलोन कैफ़े पे और ज़िंदगी का आनंद उठाया है। So I really don't want to go back, but I have to be in Bangalore. नौकरी is calling और मेरे को अपना स्कूबा डाइविंग का एडवांस वाला सर्टिफिकेशन भी करना है, लेवल 2. That is been pending for quite some time now, तो I have to finish it up this time around. तो जाना पड़ेगा यार गाइस। होली भी आ रही है अभी तो, एंड दैट्स अनदर रीज़न फॉर मी टू स्टे हियर. पुष्कर की कपड़ा फाड़ होली इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट होलीज played by human beings anywhere in the universe. So, but to move is to human, to keep moving, to keep doing. I don't know all this philosophical stuff. Let's roll, you people. Let's keep riding. The only thing I know is to keep riding, keep going forward, keep going ahead. Movement.